हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द नेम बट यू आर गोइंग टू गेस दैट विच टॉपिक वी आर गोइंग टू डू टुडे. And to guess, I am giving you certain hints. So here, the topic that we are going to do will have A, an, and D. So guess it which topic of grammar that we are picking up today. Yeah, you guys guessed it correct. We are going to cover the articles in the grammar session. So what is article? What are the types of articles? Everything we will be covering in this particular video. So stay tuned till the end of the video. In this particular thing, you will study with me, myself Miss Nati Burhana, and we will cover the articles topic today. And why articles is important, students? आर्टिकल सिर्फ ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट while we are conversing in English with someone or while you are framing a sentence in English, it is very important to take a note of the right article. So in this session, you will get to know that when to use A as an article, an as an article, and D as an article. ठीक है? So without wasting any further time, let's move ahead. Before starting knowing the usage of each article, let's know that what is an article. Article क्या होता है? So, article is nothing but a word that defines a noun, either as specific or unspecific, that is known to be as an article, students. ठीक है? अब कोई भी ऐसा word जो हमारा noun है, हम उस noun को specific या unspecific बता रहे हैं through article, that word is known to be as an article. Let's take an example. If I say apple, ठीक है, तो apple is a noun. उसको specific या unspecific किससे बता रहे हैं हम? By using an article, an apple, right? A banana. So that way हम एक noun के पहले या noun जैसे word को define करने के लिए as a specific or unspecific, we are using an article. I know it will be difficult for you to understand in the beginning. That's the reason stay tuned. We will understand more about article with the help of examples so that you guys find it easier to understand. So moving ahead, there are different types of articles. One is definite article and the other one is indefinite article. अब definite article क्या होता है? The definite article limits the meaning of a noun to a specific thing. जब भी हम definite article का use करते हैं students, we are just limiting the meaning of the noun. That means हम किसी specific thing के बारे में जब point out करते हैं, we use a definite article. I repeat, whenever we are specifying or pointing towards a specific thing, that time we use a definite article. Now, when do we use the indefinite article, students? Indefinite article is used to denote a general noun. Okay, completely opposite of definite article. Indefinite में हम कोई भी general चीज़ों को point out कर रहे होते हैं. There is nothing at specific thing in indefinite. Okay? अब definite article कौन सा होता है? The. Okay? और indefinite article is a or an. Okay, remember students, when we talk about the is a definite article. मतलब आप the को तब use करोगे when you are pointing towards certain definite thing या कोई specific thing को आप point कर रहे हो. Moving ahead, a definite article can be used with singular, plural or uncountable nouns, while indefinite article can be used to specify non-specific objects. ओके ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि indefinite को हम तब यूज करते हैं while we are not specifying a specific thing. जब हम जनरल चीज़ों की बात करते हैं, at that time we are using indefinite article like a or an. Let's take one example of definite article. Here is an example. Can you see a bottle of water? Yeah. So if a person says, please pass me the bottle of water. Now, why we have used the over here, students? Because we are talking about a specific object. और यहाँ पे object क्या है? Bottle of water. मैं point करते हुए बोल रही हूँ कि बच्चों please pass me वो वाली पानी की bottle. So वो वाली, that वो is the
स्पेसिफिक थिंग, ये हम यहाँ पे स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करें, दैट्स द रीजन वी विल यूज द आर्टिकल दी ओवर हियर। अंडरस्टूड? कब हम डेफिनाइट आर्टिकल यूज करेंगे? लेट्स टेक वन एग्जाम्पल ऑफ इनडेफिनाइट आर्टिकल। नाउ यू कैन सी वन सेंटेंस ओवर हियर, आई एट एन एप्पल। ओके, कौन सा एप्पल नहीं, आई एट एन एप्पल मतलब मैंने एक एप्पल खाया, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक जनरल नाउन की बात कर रहे हैं, सो वी हैव यूज्ड एन एज एन आर्टिकल। सिमिलरली इन द सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन रीड एज आई वेंट टू बाय अ नोटबुक। कौन सा नोटबुक, कौन सा वाला नोटबुक, वी डोंट नो। हम जनरली एक नोटबुक की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट स्पेसिफाइंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एंड दैट्स द रीजन वी हैव यूज्ड इनडेफिनाइट आर्टिकल। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स लर्न अबाउट कब कौन से आर्टिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। बट बिफोर दैट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लाइक एंड शेयर। ओके, सो यूज ऑफ ए। अब ए एज एन आर्टिकल हम कब यूज करते हैं स्टूडेंट्स? बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। यस, आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है, देयर इज अ कार ओवर हियर। जब भी सिंगुलर नाउन की बात चलती है, सिंगुलर नाउन विद अ कॉन्सोनेंट, व्हाट इज कॉन्सोनेंट स्टूडेंट्स? The alphabets which are not under the vowel. आपको vowel तो already पता होगा, right? What is vowel? Come on, say. Yes, you are correct. A, E, I, O, U are the vowels, right? So, other than vowels जो alphabets होते हैं, those are considered as consonant. So, कोई भी ऐसा word जो consonant से begin होता है, that word is that noun के आगे हम a as an article use करते हैं. So let's see one example. He owns a car. Now why we have used over here a? Because यहाँ पे car जो है it begins with C and C doesn't come under the vowels. That means it is a consonant. So any singular noun beginning with a consonant, उसके पहले अब क्या use करेंगे? A as an article. Understood? So second is before a singular noun beginning with a consonant sound. कभी कभी क्या होता है students that consonant का sound आता है, vowel से ही begin होता है हमारा नाउन, but sound जो है वो consonant का आता है. Let's see one example. Now he studies in a university. Okay, अब आप बोलेंगे कि मैम यूनिवर्सिटी तो यू से स्टार्ट हुआ, तो वो तो एक वॉवल है, उसके पहले एक क्यू लगाया. बट लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी का साउंड को प्रेडिक्ट करने का कोशिश करो. अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ यूनिवर्सिटी. एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ साउंड के बारे में. शी लिव्स इन अ यूरोपियन कंट्री. ओके, आई रिपीट, शी लिव्स इन ए यूरोपियन कंट्री. अब यहाँ पे भी यूरोपियन स्टार्ट्स विद अ वॉवल ई. ये तो कॉन्सोनेंट नहीं है, राइट? तो भी हमने यूरोपियन के पहले अ का यूज किया है. ऐसा क्यों किया? नाउ लिसन टू मी केयरफुली. द वर्ड यूनिवर्सिटी बिगिंस विद य. आप देखेंगे कि उसका साउंड इज वाई, यू, राइट? यूनिवर्सिटी, जिससे कि वो वाई से स्टार्ट हो रहा हो, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द साउंड ऑल्सो ऑफ द नाउन, सो दैट आप समझ सके कि उससे पहले ए लगेगा या एन लगेगा. ठीक है? सो हियर इन बोथ द केसेस यू कैन हियर द साउंड ऑफ अ वाई, एंड वाई इज अ कॉन्सोनेंट, सो वी यूज अ यूनिवर्सिटी. सिमिलरली इन द अदर एग्जाम्पल, यूरोपियन, यूरोपियन के लिए भी वाई का साउंड आता है, और वाई एक कॉन्सोनेंट है स्टूडेंट्स, इसीलिए हमने यूरोपियन और यूनिवर्सिटी के पहले ए एज एन आर्टिकल का यूज किया है. I hope it is clear for you. If you guys have any doubt in understanding now, just put the question in the comment box below. I will try my best to answer y'all and clear your doubts. Okay? So moving ahead with it. Now, before some number collectives and numbers. Okay, number collectives and numbers के पहले भी हम a का use करते हैं as an article. Let's understand this with example. It will be easier for you. A dozen of apple. A dozen of apple means यहाँ पे dozen जो है वो एक number की बात कर रहा है कि 12 apples, right? So whenever we are talking about some number collectives and numbers, so उससे पहले हम a as an article का use करेंगे.
Let's take one more example. Is it safe to drink a gallon of water a day? A day. A gallon of water. ठीक है, यहाँ पे gallon of water means quantity of water. ठीक है, gallon एक quantity बता रहा है. So whenever we are talking about any kind of quantity, हम उससे पहले भी a का use करेंगे. Okay? Understood? So now let's start with the use of an. आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा यहाँ पे. शी इज एन अकम्प्लिश्ड डांसर. एन का हमने यूज क्यों किया है? बिकॉज डांसर इज अ नाउन. ओके, अकम्प्लिश्ड डांसर हमने एक एडजेक्टिव भी यूज किया विच शोज दैट हाउ इज द डांसर अकम्प्लिश्ड डांसर. एंड अकम्प्लिश के पहले एन यूज किया है. क्यों? क्योंकि अकम्प्लिश इज स्टार्टिंग विद द वोवल. अकम्प्लिश जो है वो एक वॉवल से स्टार्ट हो रहा है. वॉवल्स क्या होता है वो मैंने मेंशन किया है स्टूडेंट स्क्रीन पर. AEIOU. सो AEIOU से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के आगे हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स? वी विल यूज एन एज एन आर्टिकल. ठीक है, और इसका साउंड भी अ से ही आ रहा है, राइट? सो वी विल यूज एन एज एन आर्टिकल. मूविंग अहेड. Now, before a noun starting with silent H, ये तो आपने सुना ही होगा students, that many a times we talk about a time an hour ago, right? An hour ago बोलते तो R is starting with H और H तो consonant है, वो तो vowel नहीं है, तो क्यों हम उसके पहले an का use करते हैं, right? Now I'll give you a reason that why do we do that. Let's see. An honest man. ऑनेस्ट भी तो एन से शुरू हुआ, सॉरी एच से शुरू हुआ है. एच इज अगेन अ कॉन्सोनेंट. बट बिफोर अ नाउन स्टार्टिंग विथ साइलेंट एच हम लोग ऑनेस्ट बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, हॉनेस्ट नहीं बोलते. वी प्रोनाउंस द वर्ड एज ऑनेस्ट. ओ द साउंड ऑफ ओ इज देयर, राइट, वेयर एच इज अ साइलेंट वर्ड. तो वहां पे भी आप आर्टिकल एन का यूज करोगे. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स. एन आर टू गो. ओके, एन आर टू गो. यहाँ पे भी आर बोलते हैं हम, हार नहीं बोलते. देयर इज नो साउंड ऑफ एच ओवर हियर. एच इज अ साइलेंट इन दिस केस. वी कॉल इट एज एन आर. So an is used as an article whenever the H is silent. Okay, students? So here is one of the explanation for the same. The noun beginning with silent H begins with the sound of O. और O तो आपको पता है that it is in vowel. Right? It is a vowel and hence we use an before it. जैसे कि an MTech, an MBA, an MLA, MA, MSc, ये सब कुछ डिग्रीज है स्टूडेंट्स और इनके आगे भी हम n का यूज करते हैं. Why? Because whenever we say the word M, तो M के इसमें भी A का साउंड पहले आता है. ये MLA तो M में भी A का साउंड आ रहा है, इसीलिए हम an वर्ड यूज, an आर्टिकल यूज करते हैं. Okay, the above examples have M as a sound and so E is a vowel and hence we are using that before the above mentioned words. Okay, students? So here we move ahead. The last article, we will understand that when we have to use the article the. Kindly pay attention students very carefully. Again, very important one. So to denote a specific entity, we use the article the. For example, again I'm taking the same example so that आपको एक clarity मिले. Please pass me the bottle of water. Specific चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो वाली bottle of water मुझे पास करो. So we are using the as an article. One more example students. Please shut the window. यहाँ पे हम आर्टिकल दी की बात कर रहे हैं क्योंकि मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि वो वाली विंडो को बंद कर दीजिए. So please shut the window. Okay. Moving ahead, where here we are talking about a specific object that is the bottle of water. इसीलिए हमने specific चीज को denote करने के लिए we have used the article the. Okay, so moving ahead. Now, we can also use the article the when the entity being denoted is previously mentioned. इसको simply आपको explain करने के लिए students, जब भी किसी ऐसे चीज़ की आप बात कर रहे हो जो आपने पहले की हुई है, okay, तो उसके लिए भी हम the का use करेंगे. For example, I am going to wear the new dress that I bought yesterday. So I am denoting over here the object which is previously mentioned. Dress पहले वाला.
ओके, सो मैं वो ड्रेस पहनूंगी जो मैं पहले लेकर आई थी. सो जो ओवर हियर इज डिनोटिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, एंड इसीलिए दी आर्टिकल का यूज किया है. Moving ahead, students, in this example, the dress bought the previous day is being denoted, and hence we will use the. Okay, thank you so much for watching, and subscribe and like and share to my channel. Also, please do share with all those who can't afford expensive coachings, and so keep supporting and keep growing, keep learning as well. Thank you so much once again.